Hey, you guys, what is up? This is Dr. Ayush Agrawal, the founder of The Abstract Constitution, and with me is. Hi guys, I am Akshay Agrawal, co-founder of CHAAR. So जैसा कि आप सबको पता है कि गुड वाइब्स और गुड लाइफ्स हमने पढ़ना शुरू किया है। इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आउट है यूट्यूब पे और इंस्टा पे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग इसका सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड what is lacking in law of attraction basically, which needs an introduction of law of vibration. So yeah, you know what, ये सब करने से पहले हम एक और गेस्ट को ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पे, so please join in Dr. Kiran Yadav as well, and I think she has a lot to say about our first video. तो एक बार उसको ज्वाइन करते हैं. Hi everyone, this is Dr. Kiran this side. I would like to say that the journey towards self-growth is not always very entertaining, but I'm glad that we all have started that journey. And with Akshay, I would like to say that Akshay, when you were defining self-love, I liked that definition because it included both the main aspects of it, that is self-acceptance as well as self-growth. So yeah, as well as I like the idea of more and more people talking about it. So in this part of the video, we are going to discuss about law of attraction. तो आप लोगों को पता ही होगा law of attraction के बारे में. I think law of attraction या फिर law of manifestation हम सबको the secret की वजह से पता है, like most of the people, and मेरी तो ये first self help book रही, like as far as I can remember, and I think most of the people who मतलब got introduced to the self help genre, उन सबकी ये first book रही है, the secret. तो I think सब लोगों को इसके बारे में कुछ तो idea है, but let's discuss more about it. What do you think, Kiran, Dr. Kiran? Yeah, so it wasn't my first kind of self-help book, but when I read it for the first time, I felt like I've known this thing for a long time, but there was no word for it. Like we have all been told since childhood, do this thing, pray for this thing, and imagine being this person and you would be this person, but we never knew that this is the law of attraction. So when I first time read this book, I was like, okay, so there's a word for it, there is a concept about this. So yeah, that's how I started this. And Rhonda Byrne, I have to say, she's a very beautiful author. She has also written The Magic also, which is the second version of The Secret, which is also a great book. Correct. Yeah. मेरा इंट्रोडक्शन इससे एज अ बुक फॉर्मेट में नहीं हुआ था, एक वीडियो आई थी बहुत पहले, अगर याद हो तो, कि ये रात छुपा के रखा गया था, इस तरह की वीडियो. तो वो मेरी फर्स्ट काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प वीडियोस थी. हाँ, उससे पहले मैं मूवीज ही देखता था बस. हाँ, बट उसमें फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुआ था. अच्छा, ये ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो इट इज वेरी मिसअंडरस्टूड. कुछ लोग हैं जो उसको बहुत मतलब लाइक दे थिंक इट्स अ फुल टाइम थिंग. सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स फॉलो करके आप जिंदगी में हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड देयर आर पीपल हु थिंक it's pseudo science, or let's say it doesn't work at all. And I think both the things are wrong, because लोग इसको अगर पूरा मेन स्ट्रीम कर देंगे या फिर इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे, then the law of attraction doesn't work. I think it has to be a balance of both the things, like try to manifest things, but also try to do things outside the manifestation rules, because manifestation many times, as I said, is being misunderstood. कि आप बैठो और सोचो, इमेजिन करो that you're going to get that. And this is, by the way, this is my personal view on this. I can be wrong, I can be completely wrong, but जैसा जितना मैंने सुना है manifestation के बारे में, that you just sit in your room and everything and just try to manifest whatever you want, and तुम्हें वो चीज मिलने लगेगी automatically because universe is trying to listen to you. But I think that is not the right way to do it. Like you have to sit in your room, meditate and think about it, but again, move your ass and go outside and work for it as well. Like don't just work for it mindlessly, but don't just sit in your room and meditate. You have to do both the things. And ये चीज बहुत misunderstood है लोगों में जो भी manifestation के बारे में बात करते हैं. So I think there should be proper coaches, there should be proper videos that people watch, no pseudo information, no pseudo quotes on Instagram. अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए, I think it's the best thing one can ever have, because universe actually listens to you, and I think it works wonders. That is what I think. So my views are like, I think we have a very constricted or limited knowledge about this, the law of attraction. We all think that it is only positive thinking you have to do and everything, which is not true.
because law of attraction means that whatever you are thinking and you're investing in, that thing or that you know these things become true. So इसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो, आप नेगेटिव थॉट्स को भी अगर आप बहुत ही परसिस्टेंटली सोच रहे हो और वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम उसमें, तो वो भी सच होता है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट फॉर पॉजिटिव थिंकिंग and making your dreams true. Also, people think that law of attraction only works at one level, which is not true. Law of attraction works on like on your conscious level as well as on your subconscious level. For example, when you're reading that horoscope, whatever is going to happen to you, you think that that happened because of the thing you read. Like अगर वो negative है तो you think, oh इसमें ये लिखा था, that happened to me. Positive है तो you also think, अच्छा इसमें लिखा था, that happened to me. So that is not the thing, is कि जो चीज है वो सच या गलत नहीं है. It's your thoughts. जो तुम ज्यादा सोच रहे हो वो चीजें सच हो रही है. तुम नेगेटिव ज्यादा सोचोगे तो वो सच होगा, तुम पॉजिटिव ज्यादा सोचोगे तो वो सच होगा. And also, as we already mentioned, Dr. Ayush, that it is not all about thinking, manifesting, and just sitting in a corner and saying, I want this, I want this, I want this. That doesn't work. When you're doing that, affirmations we call it, you have to be diligent enough that you have to work for it, because nothing comes without work. Correct. That is so true. So many points I had to take away. Okay, so all is well and good, but Akshay, book में क्या लिखा है? Like this is the second part of the book, Good Vibes, Good Life. तो what according to you is written in the book and तुझे क्या लगा उस चीज को पढ़ के? ठीक है, तो बुक में बेसिकली वेक्स किंग ने एक स्टोरी के थ्रू हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उनका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो बताने की कोशिश की. तो एक उनका ट्रिप था जहाँ पे उनके दोस्त जा रहे थे सब लोग, बट वो नहीं जा पा रहे थे. तो उनको कुछ $1,500 से ऐसा कुछ जरूरी था. तो वो उनके पास किसी बैंक में जमा थे, बट वो क्लियर नहीं हुआ था वो चेक या जो भी बोलो उसको. बट उन्होंने सोचा कि हो जाए, मतलब उन्होंने लॉ ऑफ सीक्रेट पढ़ा. वो उससे पहले सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि नहीं जा सकते, गर्मियों की छुट्टियां बेकार हो गई वगैरह वगैरह. बट फिर उन्होंने जब पॉजिटिवली सोचना शुरू किया तो वो रसीद उनके हाथ में आ गई, वो क्या चेक कैश हो गया और बेसिकली रुपए का इंतजाम हो गया और वो लास्ट मोमेंट पे चले गए. तो उनको लगा कि हाँ यार, पॉजिटिव थिंकिंग या इसको जो भी बोले एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन, ये काम तो करता है ना. बट साथ में वो ये बोलते हैं कि अगर ये लॉ है तो इसको हर जगह काम करना चाहिए, है ना, कि भाई मैं जो भी सोचूं सच हो जाए. बट वहां पे वो काम नहीं करता. तो इनका मानना है कि कुछ कमी है. पर्सनली मैं अगर बोलूं अपनी बात, तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन स्टार्टिंग ऑफ अ कन्वर्सेशन है. जितनी स्ट्रांग वो कन्वर्सेशन होगी उतना स्ट्रांग आपका उसके लिए एक्शन होगा बेसिकली एट द एंड. कि आपको जैसे हमें 50 चीजें करनी है जिंदगी में, बट जितना स्ट्रांगली हम उन 2 चीज या 3 चीज को बारे में सोचेंगे, वो 2 या 3 चीज उतने अच्छे से हो पाएंगी. और जिसके लिए हम कम सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, वो नहीं हो पाएंगी. तो मेरे लिए पर्सनली उसका वो रेलेवेंस है कि अगर कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. क्योंकि वो हमें एक सही जगह पे दे देगा और उस प्लेस की एक सही जगह हमारे दिमाग में बैठा देगा कि अच्छा ये क्या है और क्या है. क्योंकि अगर सोचना शुरू नहीं किया तो काम कैसे करेंगे. और इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा कोट भी है कि इफ यू थिंक यू कैन डू इट, यू आर राइट, एंड इफ यू थिंक यू कांट डू इट, यू आर राइट. तो बेसिकली ये माइंडसेट का कुछ गेम ही तो है, जो अगर हम सही से खेल लें तो हम सही पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे. पॉजिटिव वर्ड थोड़ा मिसअंडरस्टूड है मेरे हिसाब से. तो हम सही एनर्जी में रहेंगे. और अगर हम उसको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग उस एनर्जी में नहीं रहेंगे बेसिकली, है ना. हाँ. तो इसी पॉइंट पे आगे जाके हमारे ऑथर ने बोला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कमी है. वो कमी बेसिकली ये है कि अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं बट उससे वो काम नहीं हो रहा है. और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं पर वो काम हो रहा है ना. तो उसमें वेक्स किंग बोलते हैं कि हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा. लॉ ऑफ वाइब्रेशन, because everything in this world have a particular vibration in it. Every person, every human being, every non-human being also have a particular vibration in it in which it works. So basically अगर हम उस vibration को match कर पाए या उस position की vibration को match कर पाए, तो we will be able to work on that. Else हमें बहुत मुश्किल होगी.
मैं आजकल उतना बुक्स में आई डोंट गेट मच टाइम टू रीड बुक्स दीस डेज, बट आई एम ऑलवेज इनटू पॉडकास्ट। एंड रिसेंटली मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लाई, एंड उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली कि व्हेन वी मेडिटेट, व्हेन वी मेडिटेट, आवर इंट्यूटिव पावर इंक्रीजेस, आवर इंट्यूटिव पावर इंक्रीजेस। एंड इंट्यूशन को भी बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता इंट्यूशन का मतलब क्या। लाइक कुछ लोगों को ऑरा looks like a very no out of this world topic, बहुत लोग ऑरा से रिलेट नहीं कर पाते, but the thing is when you are intuitive you can actually connect to other people's aura. Again, talking about vibrations, why I'm mentioning all these things, जब हम किसी भी इंडिविजुअल की वाइब्रेशन की बात करते हैं, some people call it vibration and some people call it aura. And when we meditate and when we actually try to manifest that thing कि मुझे सामने वाले को समझना है, I actually want to connect to that person, तब हमारी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है और उसकी वजह से हम उसके ऑरा से या उसकी वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाते हैं। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन डजंट ओनली वर्क ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे कि सबसे ज्यादा लोग मैनिफेस्टेशन को पैसे के लिए या फिर अच्छी जॉब या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए यूज करना चाहते हैं। बट द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल relationships, like general relation with any person around you, any person at all, like the first impression you put on any person that you when you enter the room, तो उसमें भी ये चीज हेल्प करती है। इफ यू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट जस्ट मैनिफेस्टिंग मटेरियलिस्टिक थिंग बट ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इंट्यूशन, inner intuition. And when you are intuitive, you actually increase the quality of your life overall. फिर तुम्हें एक चीज के लिए वेट नहीं करना, like you connect yourself to the universe, you surrender yourself to the universe. ऐसा, this is not what I work on, this is not my words, this is what I've heard. So this is just I'm just repeating those things. आज ही मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट सुन रहा था on purpose with Jay Shetty and Shaq. Alright, and उसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, like Shaq is known for comedy videos or all those things, but thing is he's very intellectual as well. I just got to know it today. तो उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक ब्लैक कप के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे ब्लैक कप चाहिए, ब्लैक कप चाहिए, and no, I'm just messing with my head and everything कि मुझे ब्लैक कप ही चाहिए, but यूनिवर्स ने मेरे लिए गोल्डन कप, मेरे लिए ब्लू कप, मेरे लिए येलो कप ऑलरेडी रखा है इन प्लेस, बट आई एम सो स्टक ऑन द ब्लैक कप कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। एंड इस प्रोसेस की वजह से ना मुझे ब्लैक कप मिल पा रहा है बिकॉज इट्स नॉट रियली मेंट फॉर मी, एंड मैं उस येलो और उस गोल्डन और उस ब्लू कप को भी इग्नोर कर रहा हूँ। So when you surrender to the universe, when you get connected to the vibrations and actually get intuitive, तो तुम्हें अपनी surroundings का पता चलता है, okay, maybe the black cup is not for me, but I also have the option of the golden cup, which is maybe far better than what I desire. Okay, I guess मैंने बहुत कुछ बोल दिया यहाँ पे, but Kiran, Doctor, what do you think about the law of vibrations here? Can you just tell me very briefly? Yeah, so Ayush, you already said a lot about law of vibration and basically vibrations, but I would like to add in this, like, first of all, we need to be aware of this fact, जैसा कि vibrations हैं, like vibrations are there all around you, not just in non-living things, also in living things. Like we all have studied at least in till our 10th standard, like sound waves are there, normal waves are there. Everything is actually a wave, a sequence of vibrations, right? So similar is the case with us as humans or as living beings, that we also emit vibrations, which we now called in short as vibes, right? So sometimes people say that your vibrations are expressed in terms of emotions or in terms of body language you have, but sometimes there are no said words, there are no said body expressions you are giving, but get people resonate with your vibrations, right? If you see that someone is speaking or doing something in a certain way, like someone is like a speaker has entered into a hall full of audience. Some people won't like that speaker. Other people would be like, "Oh my God, he or she is so much like me." In fact, they might be from very different backgrounds, from very different statuses, but still there would be something that people would be resonating with that person. So I think those things are vibrations, and when you're at a certain level of vibrations with yourself and with the person you're looking to become, like when these things are matching, like these things are in tune with each other, you get to like a wave starts flowing.
And when a wave starts going, it's always a success, you know. When there's a simple vibration, it's not going to end up very, distant, I would say, like in physics. But if it's a wave, it's going to last longer. So I think that's what I would like to say about vibrations. हम्म। हाँ, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। हम कह रहे हैं कि टू रीच टू अ सर्टेन प्लेस वी नीड टू यूज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन। और वैसे भी अगर देखा जाए तो whoever is successful is directly or indirectly using it। क्योंकि जब आप एक मीटिंग में जाने से पहले एक पर्टिकुलर सेट पे आते हो कि मैं मीटिंग में प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो बेसिकली आप वो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपने दिमाग में 5-6 बार चला चुके होते हो। तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन क्या पूछ सकता है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हो तो आपको पता है कि वो क्या पूछेगा, क्या कर रहा है, क्या हो सकता है, वहाँ पे कौन सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फनी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो वो सब चीजें ऐड कर देंगी इसमें, है ना। Likewise in all the professions you need to have some kind of pre demonstration to yourself before giving it to any other, so that you do in all the professions, right? But I think it's worth a try. अगर इतने great personalities जिन्होंने कुछ कुछ अच्छा अचीव कर लिया है जिंदगी में, जो अच्छा अचीव कर भी रहे हैं, they are on the journey, अगर वो इस चीज के supporter है, if they use these things or they just talk about these things, there's no harm in actually getting to know this thing better. स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन की हम कैसे उस लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज में ले सकते हैं, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। तो ठीक है, सी यू गाइस, सी यू ऑल। आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर कमेंट्स में बताओ और लाइक करके बताओ, हमें बताओ। बट हमें बताओ अगर कुछ पॉइंट खराब लगा है तो वो भी बताओ, हमें अच्छा लगेगा जानना। और हमें डीएम भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कमेंट करने में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो, किसी भी तरह की। यू कैन ऑलवेज डीएम द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और चार लोग, which is Akshay, and also follow Dr. Kiran for more insightful information that she just shared on this video. All links are in the description. Yeah. Like, share, subscribe. Yeah. हाँ, ये भी कर लेना।